15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर घर तिरंगा मुहिम का आह्वान किया गया है, जिसके मद्देनजर 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जाने वाली है। तब नर्मदा से ये खबर सामने आ रही है। दरअसल नर्मदा जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तब आज तिरंगा यात्रा नर्मदा में निकाली गई थी। इंचार्ज जिला विकास अधिकारी और जिला ग्राम विकास एजेंसी के नियामक जेके जादव की ओर से नांदोद तालुका के वड़िया गांव में तिरंगा यात्रा का प्रारंभ करवाया था। वड़िया गांव के लोग सड़कों पर हाथ में तिरंगा लिए निकल पड़े थे। इस तिरंगा यात्रा में गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य और साथ ही गांव के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। सभी की ओर से इस दौरान जय हिंद के नारे भी लगाए गए थे। हूँ जेके जादव, इंचार्ज जिला विकास अधिकारी नर्मदा। आज रोज वड़िया ग्राम पंचायत खाते तिरंगा यात्रा में शुरुआत थई रही है। तारीख 8 थी लईने तारीख 15 ऑगस्ट सुधी नर्मदा जिल्ला में तमाम ग्राम पंचायतों, तमाम गामों में तिरंगा यात्राનું आयोजन કરવામાં આવેલ છે। સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ગૌરવભેર ઉજવણીના ભાગરૂપે મારી નર્મદા જિલ્લાના સર્વ નાગરિકો, આબાલ વૃદ્ધ, વડીલો, બાળકો, મહિલાઓ તેમજ તમામ વર્ગના નાગરિકોને અપીલ છે ગૌરવભેર આપના ગામમાં યોજાતી તિરંગા યાત્રામાં ભાગ લે તેમજ પોતાના ઘરે શહીદોના માનમાં આપના દેશની સ્વતંત્રતાની યાદમાં તિરંગો લહેરાવે અને એક પેડ માં કે નામ આ અભિયાન હેઠળ પણ જોડાઈએ। આપના આંગણામાં, આપના ઘરે, આપના કામના સ્થળે જ્યાં જ્યાં પણ આપને જગ્યા હોય ત્યાં આપના કુટુંબના પરિજનોની યાદમાં એક વૃક્ષનું પણ વાવેતર કરીએ। તો ફરીથી સર્વે નર્મદા જિલ્લાના નાગરિકોને અપીલ છે ગૌરવભેર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં તિરંગા યાત્રામાં ભાગ લો, પોતાના ઘરે તિરંગાને ફરકાવો અને આપના દેશના સ્વાતંત્ર્ય માટે, આપના સ્વાતંત્ર્ય માટે શહીદોના બલિદાનને, तिरंगाना गौरवने આપણે याद करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।